Hi guys, मैं हूँ अन्वेषा and welcome back to my YouTube channel Simple Tips अन्वेषा. So it is that time of the year guys where we all are busy attending parties, meetings, friends and going out a lot. So इस time में सबसे important क्या है हमारे लिए so that we all look pretty and beautiful. Yes, it's our hair, right? So बालों को अच्छे दिखने के लिए we do everything. बट अगर कभी कभी हमें ग्रे हेयर एंड ग्रे स्टैंड दिख जाए तो फिर कैसा लगता है. करेंटली मैंने कुछ अपने क्राउन एरिया पे ग्रे स्टैंड नोटिस किए हैं एंड आई वांट टू कवर देम अप एंड हाउ आई एक्चुअली कवर देम अप आई एम गोइंग टू शो इट टू यू गाइस राइट नाउ क्योंकि मुझे ये पहली बार करनी थी एंड आई वांटेड द एप्लीकेशन टू बी कंफर्टेबल एंड स्मूथ. सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई डू इट. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड या लेट्स कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो. So I'm going to use the Godrej Expert Rich Creme hair color shade dark brown. So as you guys know, I have some brown highlights on my hair, so it is going to perfectly match with my hair color shade. So this is the shade that I'm going to use guys, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये exactly कैसे मैं अप्लाई करती हूँ. बहुत easy है, बहुत अफोर्डेबल है. दिस इज जस्ट फॉर 33 रुपीज. जो मुझे सबसे अच्छी लगी बात गाइज कि इसमें कोई अमोनिया नहीं है. देयर इज नो अमोनिया इन दिस हेयर कलर प्रोडक्ट एंड इट हैज 10x एलोवेरा विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर hair. We all know that aloe vera is good for your hair. So yeah, I am very excited to try this out and do this for the first time. मुझे ये कलर जो है recommend किया था मेरी friend ने, so I'm also excited to see how it works. I've heard it's very quick and let's see. इसमें total 5 shades है और जो बाकी shades है they are black brown, burgundy, natural black and natural brown. So now let's begin the process. Once you open the pouch, it has two things, a developer and colorant. Take a non-metallic bowl and empty all the pouches in the bowl and mix as it is. No need to measure quantity. Once you mix the product, it looks something like this. Now let's begin with the application. I have just applied some petroleum jelly on my hairline. It is very simple to apply, so this is how I take sections and apply the whole color in my hair. Once I have applied it on my whole hair, I will just make a bun and tie it. Simply just keep it for 30 minutes and wash it with a sulfate-free shampoo. And voila! So guys, मैंने अभी hair wash किया है and after that you can clearly see that my hair looks soft, shiny, silky and none of the grays are visible. My hair looks absolutely awesome guys and the best part is it was so quick, very comfortable at home and काफी budget में था. So if you guys also want to check out the product, मैं नीचे description box में एक link डाल दूंगी and yeah, do let me know comment section में आपको कैसा लगा मेरा ये hair transformation और मैं यहाँ पर links डाल दूंगी मेरे दूसरे videos का, आप जरूर check out कर लेना. Till then, take care. I'll see you again in the next video. Bye.